गुड मॉर्निंग वंडरफुल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? चलते हैं आज फिर से एक नई जर्नी पर। बिफोर दैट, हियर आर सम गाइडलाइंस फॉर ऑल ऑफ यू। Kindly refresh your screen if you cannot see or cannot hear properly. Watch the class in full screen, enlarge using the square at the bottom right corner of the video. Use the chat box only for asking the doubts, dear children. Don't spam the chat box. Do tell your friends to attend these online classes. Here are the COVID guidelines for all of you. That is CAB. कैसे बचे इनसे? Wear mask. Follow physical distancing of 2 meters. 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी. Maintain hand hygiene. ये बचा के रखेगा आपको COVID-19 से. Before we begin our session, let's acknowledge जो resources हमने use किए हैं अपने lesson के लिए. And there's a disclaimer that if any inadvertent error occurs, हम उसके लिए पहले से ही माफी मांग लेते हैं. Here's the English team right in front of you, which is guided by Mrs. Nandini Sarangal, the core academic team leader of English faculty. This is me, Vandana Harith, with me, Mrs. Sonia Makhija, and we have the YouTube moderators with us as Mrs. Seema Kumar, Mrs. Anjali Chauhan, Mr. Manish Sharma, and Mrs. Rajni Gemini. So today's facilitators, that's me, Mrs. Vandana Harith, lecture English from GSKV Dilshad Garden, and with me, my friend, Mrs. Sonia Makhija. Oh, good morning, beautiful audience. We are all up so bright and early, ready to start with a bang. And what a pleasure to be back once again. I am your facilitator for today, along with Vandana. I am Sonia Makhija from SKV Rajori Garden Extension. Today, we will discuss a play that highlights the dignity and value of all people and its importance of connection between them. So, here we move on. So, before we moving on to the chapter, let's talk about the author first of all, Susan Hill. Susan Hill was born on February 5, 1942, is an English author of fiction and non-fiction works. Her famous novels are right here in front of you, The Woman in Black, The Mist in the Mirror, and there are some more others. And for I Am the King of the Castle, she has received Somerset Maugham Award in 1971. Let's begin our wonderful lesson on the face of it by Susan Hill. Okay, thank you, Vandana. But before we begin, let's put on our thinking caps and do a little brainstorming. Now, right in front of your screen, there are 9 boxes, and each box has a situation clearly defined. Now, I want you to read with me the situations given in boxes 1 to 9 and try to recollect a similar situation. आप इन boxes में जो situations हैं उनको देखिए, हमारे साथ पढ़िए और इनमें से एक situation को identify करिए जो आपने कभी भी अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस किया होगा. So we begin. I start reading the situation and I go to situation 1. For example, there is a situation where a classmate calls you mean names. Situation 2, a friend says he/she will be your friend if you do what he or she wants. आपको वही मानना पड़ेगा जो आपका जो है दोस्त कह रहा है. Your friend is ignoring you. Situation number 4, your friend is bossing/bullying you around. जबरदस्ती आपको कुछ काम करने के लिए या अपने आप को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं. Situation 5, you shared a secret with your friend and he/she promised not to tell anyone, but he or she told everyone. So you're disappointed.
जो आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था अपने दोस्त के साथ, वो ब्रेक हो गया. नाउ वंदना मैम, कैन यू प्लीज रीड द अदर सिचुएशंस आल्सो? सोनिया मैम, सारी की सारी सिचुएशंस ही ऐसी हैं जो हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस की हैं. ये सारी सिचुएशन आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट टू. सो योर फ्रेंड इज वेरी पोजेसिव एंड डज नॉट वांट यू टू टॉक विद अदर फ्रेंड्स. ऐसा हुआ है जब मैं स्कूल में थी. The seventh situation is you want to be a part of your classmates group, but they flatly refuse. Maybe ऐसा मेरे साथ हुआ है. मुझे याद आ रहा है कि जब मैं अपने एक फ्रेंड ग्रुप में जाना चाहती थी तो उन्होंने मतलब मुझे अपने साथ पिकनिक पर अपने ग्रुप के साथ लेने से मना ही कर दिया. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट कुड बी द रीजन. मैं सोचती रही और आई वाज रियली वेरी डिप्रेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. The eighth situation is the classmate says she doesn't like you because your picture is ugly and stupid. Yes, I can absolutely relate. ये बहुत होता है ये सब चीजें. इनफैक्ट हमारे बच्चे भी चैट बॉक्स में अपनी अपनी सिचुएशंस लिख रहे हैं. सो डियर बच्चों, कौन सी ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर स्क्रीन पर जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है आपकी लाइफ में? And the final and last. And many students are pointing at situation 5. So some secret which has been, shared and which has been let out. So a lot of our friends are pointing at situation 5. Okay, so we'll read situation 9. Yes, Vandana ma'am. Yeah, your friend is making fun of a student with disability and you don't like it. Absolutely. मैंने भी ये चीज को देखा है, फेस किया है, समझाया भी है अपने फ्रेंड को, बट टू ऑफ नो यूज एट ऑल. सो बच्चों, आपने कौन सा चूज किया? आपने बहुत सारे बच्चे 5, 7, 5, 7. सो मैक्सिमम जो बच्चे लिख रहे हैं वो 5 ऑप्शन को लिख रहे हैं सोनिया मैम. सो चलिए आगे चलते हैं बच्चों. Yes. So now once we've identified a situation, now let's quickly identify an emotion. Look at the storm starters which are right there in front of you. Now think of the feeling you had the time you picked up the situation. So you correlate the situation with the emotions which are there on your screen. In meanwhile, I'm going to ask you, Vandana ma'am, what situation do you relate with and what bubble cloud do you have, your feeling and emotions? Okay. So ma'am, I chose number 9. Your friend is making fun of a student with disability and you don't like it. और अगर मैं यहाँ से बबल चूज करूं अपने लिए, जैसा कि हमारे बच्चे भी लिख रहे हैं, बच्चों आप ABCD लिखना शुरू कीजिए कि कौन सा बबल के साथ में आप एसोसिएट कर सकते हो. सो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी बबल नंबर G को. आई ट्राइड वेरी हार्ड बट इट डजंट वर्क आउट. Oh, so you tried hard and it doesn't work out. And then what did you do? What thoughts and how did you manage to overcome this? So let's first identify the zone in which you would fall, the emotional zone which you fall. Right. For example, I try hard and it doesn't work out. Let's look at the screen and see there are 3 zones given. There is a green zone, there is a yellow zone, and then there is a रेड जोन. तो आपके पास एक सिचुएशन है, आपने सोचा, फिर आपने उसके साथ कोई इमोशन सोच के अटैच की. अब आप देखिए कि आप किस जोन में उसको डाल सकते हैं. ओके, सो जैसा कि मैंने जी को चूज किया, आई ट्राइड हार्ड एंड इट डजंट वर्क आउट. सो आई वाज रियली अपसेट कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, it is out of control. So I was feeling angry, upset and out of control. तो क्या मेरा zone red zone है, सोनिया मैम? Yes, it is red zone. That means you have to think about being more positive and how you can deal with this situation in a more comfortable and more passive manner. So I'm also seeing our students are also talking that they are generally in the red zone or yellow zone. There is Khushi, there is Muskan, Mohammed, Seema. They are all saying they are falling either in the yellow zone or red zone. Now, ये चीज हमें समझनी है कि कॉमनली हम सारे येलो जोन या रेड जोन में रह जाते हैं. सो द अनहैप्पी सिचुएशन लीड्स टू अनहैप्पी इमोशन. इट्स एन इक्वेशन. अनहैप्पी सिचुएशन विल लीड टू ऑब्वियसली अनहैप्पी इमोशन. भाई अब इसका इलाज क्या है? तो मैम हमारे पास है
ओके ओके, सो रेड जोन में मैं आ गई हूँ, बट दिस रियली डिस्टर्बिंग। इसका मतलब क्या मैं पॉजिटिव नहीं हूँ? सो मुझे ग्रीन जोन में आने के लिए क्या करना होगा सोनिया मैम? जैसा कि हमारे बच्चे भी पूछ रहे हैं, बच्चे भी लिख रहे हैं रेड जोन रेड जोन रेड जोन, माइन इज रेड जोन। सो बच्चे भी एसोसिएट कर पा रहे हैं कि जब भी हम अपसेट होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हमारे होती हैं, वरिड होते हैं, या फिर दे वांटिंग टू शाउट आउट, कोई ऐसी चीज होती है जो उनको पसंद नहीं आती है, दे वांट टू शाउट आउट लाइक एनीथिंग। कई बार तो दीवार में मुक्का तक मारते हैं बच्चे, मैंने भी मारा है ना? सो वी गेट रियली अपसेट, सो वी आर ऑलवेज इन रेड जोन। सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो इस ग्रीन जोन में आने के लिए हमें आगे चल करके देखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जा सकते हैं। Before we open the secret, let's unfold the characters of this story, this play, and see what situation, what emotion, and what zones are they in. So we'll bring this again in the end of the session. So coming back to this session for today, this play highlights the discrimination which is faced by the people who suffer from some disability. Now, there is this play which is focusing on two main characters and they have some disability. We'll wait and watch. The focus should be on the brighter side of life and not to brood over the shortcomings. We'll see how the person with shortcomings and society should accept each other as they are and expand their social interactions. So we'll see in the play now. Okay, so that way they can fight out the loneliness, depression, and disappointment within themselves. So quickly, Vandana ma'am, let's move on. ओके, सो ये जो डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल डिसेबिलिटी हो, ये डिसेबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, या मेरी हाइट छोटी है, या फिर मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ, या कोई और फिजिकल फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी जिसकी वजह से उनके अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस भी आ जाता है और वो दूसरों के साथ में एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। सो आज का हमारा जो प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट, इसके हैं दो मेन कैरेक्टर्स। ये है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, सो लेट्स मीट डेरी। डेरी जो है वो 14 इयर्स का बॉय है एंड ही सीक्रेटली एंटर्स लैम्स गार्डन। लैम कौन है? मिस्टर लैम हमारे सेकंड कैरेक्टर है जिसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अभी। सो डेरी जो होता है वो मिस्टर लैम के गार्डन में चोरी छुपे कूद करके एंटर कर जाता है। Derry is introvert and he fears people. Do you know why he fears people? He fears people because of his appearance. उसको अपने आप को ही पसंद नहीं है, खुद ही पसंद नहीं है वो अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसका face is burnt by acid. He is a pessimist. क्योंकि उसका face जल गया है due to an accident by acid, तो he has become pessimist. वो बहुत निराशावादी हो चुका है। He is pained by people's attitude. लोग उसकी तरफ देखते हैं, बातें बनाते हैं, दुखी होते हैं उसको देख करके और उसका मजाक उड़ाते हैं। एंड कुछ लोग उसके साथ सिंपैथी करते हैं, बट ही हेट्स देयर पिटी। ये है हम कैरेक्टर मिस्टर लैम। मिस्टर लैम का है वो गार्डन एज एन एप्पल ऑर्चर्ड। वो अपने दरवाजे खुले रखते हैं हमेशा हर किसी के लिए, बिकॉज ही रियली लव्स to interact with the people. डिसेबल सिर्फ डेरी ही नहीं था, मिस्टर लैम भी थे, क्योंकि उनका एक लेग कट गया था ड्यू टू अ बॉम्ब ब्लास्ट उनके, और वो उनका जो लेग था अब वो एक टिन का लेग के साथ में चलते थे। He is a lonely man but he is very optimistic and he keeps his spirit really high. जिस घर में वो रहते थे, he lives in a house with open windows with no curtains and he enjoys life and love people. Mr. Lamb is the one character who inspires Derry. So यहाँ पर ये हमारी ये सीन 1 की सिचुएशन है कि ये दो कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताया, वन पेसिमिस्टिक डेरी और ऑप्टिमिस्टिक मिस्टर लैम, जो मिलते हैं एक नेचुरल सेटिंग में। मिस्टर लैम इमीडिएटली उसको ट्रस्टिंग नेचर के साथ में उससे बातचीत करना चाहते हैं, बहुत ओपन है अपने एटीट्यूड में, whereas Derry is cynical.
He does not even check the gate and assumes that he must jump over the wall. वो लोगों को avoid करता है, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता है. And here we see Derry is trying to climb the wall of Mr. Lamb's garden, and he enters Mr. Lamb's garden, and we arrive at scene 1. Mr. Lamb's garden. There is an occasional sound of bird song and of trees, leaves rustling. Rustling means the soft sound, crackling sound of dry leaves. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Tentatively means very uncertainly. He's not very sure. Very politely and with great care, he walks into the garden and waits. Suddenly, he heard Mr. Lamb, and Mr. Lamb speaks to Derry. And what does he say? Mind the apples. Derry becomes really surprised and he's taken aback. Surprised हो जाता है क्योंकि तो वो चोरी छुपे गार्डन में जा रहा होता है और मिस्टर लैम्ब उसे देख लेते हैं और वो कहता है, What? Who's that? Who's there? He's absolutely surprised. And Lamb very comfortably answered, Lamb's my name. Mind the apples. Crab apples those are. Windfalls in the long grass. You be careful. So windfalls means the apples which have fallen in the long grass. Okay, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. That's all right. It's me. I'm here. What are you afraid of, Roy? What are you afraid of? Then Derry says, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. And then he says, I've got to go. Mujhe jana hai. Because he was avoiding Mr. Lamb's conversation. But Mr. Lamb is very kind. He wants Derry to remain there and he builds his confidence. And he says, since I'm out here in the garden, it is empty. मैं तो यहाँ हूँ, घर खाली है. Until I go back inside. In the meantime, I'm out here and likely to stop. So I'm here, I'm sitting in the garden. How can I go inside? It is such a beautiful day, not a day to be indoors. So we see Lamb is trying to build confidence in Derry, that he doesn't mind his being there in his garden. I don't mind who comes into the garden. The gates always open. Only you climbed the garden wall. So he says, I am always welcoming. Look at the gate. Look at this picture. His garden is always open for all and everybody. And he's welcoming them. Then Derry said very angrily, You were watching me. तुम देख रहे थे मुझे. I had not come here to steal anything. मैं चोर नहीं हूं. मैं सिर्फ ऐसे गार्डन घूमने के लिए आया था. Yes, but Lamb says, okay, I saw you because I was in the garden. The gates open. You are welcome. All are welcome. I sit here. I like sitting. The young lad steal, scrump the apples. Scrump means steal from an orchard, from a apple orchard. So you are not so young. So he is trying to build again, I say, the confidence, and he's trying to pacify Derry that I know that you're not a thief and you're welcome. I sit here, you sit along with me. So Lamb is very, very pacified and he wants to pacify Derry also. I just wanted to come into the garden. I have not here come to steal anything. So you did. I know. Here we are then. So both of us are here. We are sitting together. हम दोनों साथ हैं और बात कर लेते हैं. But you don't know me. हम क्या बात करेंगे? I have got to go now. Goodbye. So Derry over here doesn't want to indulge in the chat with the Mr. Lamb because उसे खुद से ही प्यार नहीं था और कोई अगर उससे प्यार से बात भी करने की कोशिश करता था तो he becomes really cynical कि ये मुझसे प्यार से क्यों बात कर रहा है? क्यों मुझे अपनी सिंपैथी दिखा रहा है?
So he said goodbye. Oh, there is nothing to be afraid of. It's just a garden. It's just me. What are you afraid of? Why do you want to leave? I'm not afraid. I'm not afraid of you. People are afraid of me. डेरी की आंखों में आंसू आ गए. He's become tearful. मैं किसी से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं. क्यों डरते हैं? I'm afraid of myself. Everyone is afraid of me. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know I can see what they think. लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, मुझसे घृणा करते हैं. They don't want to come near to me and they always make fun of me because of my appearance. तुम सोच रहे होगे, Mr. Lamb, here is this boy who's a poor boy. You look at me and then you see my face and you think, that's so bad. इस बेचारे बच्चे के साथ कितना बुरा हुआ है. That's so terrible. That's the ugliest thing I ever saw. Poor boy. लोग मेरे साथ में sympathy create करते हैं. But I'm not poor. You are afraid to talk to me. Anybody would be afraid to talk to me. I am afraid of myself. When I look in the mirror and I see myself, I am afraid of me. Now, Mr. Lamb is little upset when he hears Derry's outbursts, the aggression and the anger and the pain which he is feeling. So, Lamb says, he tries to change the conversation and he says, look at those apples. They are ripe. I make jelly. That's magic root. You could give me a hand. So, Mr. Lamb is inviting Derry to work with him in the garden. डेरी जो था वो मिस्टर लैम ने कॉन्वर्सेशन को चेंज कर दिया बिकॉज डेरी जो था वो बहुत ही परेशान हो गया था और डेरी ने मिस्टर लैम ने अपनी कॉन्वर्सेशन को चेंज किया तो डेरी अगेन ही गॉट एंग्री. उसने कहा व्हाई हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? पीपल ऑलवेज डू दैट. दे ऑलवेज सिंपैथाइज विद मी. तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो क्या हुआ मेरे साथ में? तुम भी दिखाओ मेरे साथ में सिंपैथी. In case I see you looking and mind and you got upset, I will tell. You don't ask me because you are afraid to. तुम मुझसे पूछना नहीं चाहते हो मेरे साथ में क्या हुआ. Why? Because you are afraid of it. Okay, if you are so interested and you want me to ask, I say so. Then tell me, what is it? You right? So he is asking Derry to tell because Derry himself encouraged Mr. Lamb to ask him. Not in fire. I'm not burnt in fire. I got acid all down that side of my face and it burned it all away. The acid, it ate my face up. It ate me up. एसिड सिर्फ मेरे फेस पे ही नहीं गिरा, उसने सिर्फ मेरा फेस नहीं जलाया, उसने मुझे पूरा ही खा लिया अंदर तक. एंड नाउ इट्स लाइक दिस दैट इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट ओवर हियर. Acid ate my face up. It ate me up. These are the very prominent lines of the chapter, dear children. Let's give it a food for thought. And let's do this activity. Yes, I feel, Vandana ma'am, this statement is very, very stark. It is so hitting. And let's see how our children perceive this statement. Yes. So dear children, over here, अभी तक जितनी भी आपने स्टोरी को समझा है, there were 2 characters. आपको चूज करने हैं 3 phrases जो Derry does not mean by this statement. Acid ate my face up, it ate me up. ऐसे कौन से वो 3 statements है? आप numbers लिख करके chat box में मुझे बताइए कि कौन से ऐसे statement है जो Derry does not mean by the statement acid ate my face up, it ate me up. Are the children writing? जितना भी अभी तक आपने इस chapter को समझा है, 2 characters, 1 Derry, 1 Mr. Lamb.
Yes. One is pessimist, one is optimist, जिसका एक different ही perspective है life को देखने का. So ऐसे कौन से 3 statements हैं, dear children? So children are writing. Yes. Expert Black Kite 2, Bridge Mohan, number 2 statement. Okay, Rishita Sehrawat, Kanika Rana. Okay, then Piyush. PB Singh, Kushal, Adarsh. Yes, many of them Yes. have come up with the answer. So we have this statement which says, okay. Acid made holes in his clothes. So he doesn't mean by this acid made holes in his clothes. तो जितने भी जो 3 statements हैं जो does not mean है, उसके अलावा जो आपका statements बचेंगी, that is absolutely the answer, which briefly describes acid ate my face up, it ate me up. So what is the next one? Children are writing. Megha Thakur, Prem Prakash, Muskan Ansari, Lovely Chauhan. Very good. Wonderful, dear children. You are participating in the live chat. That's so wonderful. Very nice. Very nice. कुछ बच्चों ने लिखा है, कांता ने लिखा है 2, 3, 4, राजकुमार ने लिखा है 2, 10 and 4. So देखते हैं, हमने second option यहाँ पर दिया, acid made holes in his clothes. The next one is found ways to overcome his loneliness. अभी तक डेरी ने ऐसा कुछ भी नहीं शो किया. He's a absolutely pessimist. And last one is number 10. Never had anyone to talk to. So इसके अलावा जितनी भी statements बची हैं, the misery suffered by Derry after the unfortunate incident, ignored by others, feels awkward and abnormal. There's a sense of isolation. There are unkind comments. There's overprotective attitude of mother, and there were no true friends also. So here's the culmination of the activity. That's wonderful that you participated. Then Derry says, it means you're not interested in my story when I tell acid ate my face up. It ate me up. तुम बिल्कुल interested नहीं हो मेरी story में? Okay, Mr. Lamb is very comfortable and he says, there is nothing God made that doesn't interest me. I am interested in each and everything. So why do you think I'm not interested? Look over there. And he points to that part of the garden and he says, there's that part of the garden which you see on the screen. Some call them weeds. What are weeds? Weeds are unwanted plants which we pull out from the main plant. So he says, some call them weeds. If you like, then a weed garden. There's fruit and there are flowers and trees and herbs, all sorts. But over there, weeds. I grow weeds. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing, same as you and me. This line is very important. Let me take a minute to explain. So he says, whether a plant is considered a weed or a flower, it is just a matter of perspective and personal choice. आप एक प्लांट को वीड कैटेगराइज कर रहे हैं या फ्लावर कैटेगराइज कर रहे हैं, इट इज अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस एंड पर्सपेक्टिव, बट इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी. पर्सपेक्टिव्स कैन चेंज. अ प्लांट, अ फ्लावर कैन बी सीन एज समथिंग पॉजिटिव एंड डिजायरेबल. कुछ आप उसको देख के पॉजिटिव फील कर सकते हैं, और अ वीड which is something negative and undesirable, just like the disability. So here Mr. Lamb is giving a hint to Derry. वो Derry को एक hint दे रहा है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि change the way in which you perceive the world and how the world views you. So here this comparison with the weed is very, very important. Right. That's very nice. That's an absolutely different perspective. वीड के बारे में मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो भी जस्ट लाइक फ्लावर, जबकि वीड को जिसे हम हिंदी में खरपतवार कहते हैं, सो उसको ऐसे ही उखाड़ देते हैं, है ना, क्योंकि वो दूसरे फ्लावर्स की ग्रोथ को हिंडर करते हैं. बट वीड इज एब्सोल्युटली just like a flower only because it also has life. तो उसी तरीके से जैसे सभी के अंदर लाइफ है, पेड़ पौधे, चाहे वो वीड हो चाहे वो फ्लावर हो, उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स भी हैं, चाहे उनके अंदर कोई भी शॉर्ट कमिंग्स हो, all together they all are life. But we are not the same. But Derry ये बात सुन करके फिर भी खुश नहीं हुआ.
वो कहते हैं कि ठीक है, weeds and flowers you call save, that they have life, but we are not same. तुम अलग हो, मैं अलग हूं. So Mr. Lamb says, yes, he's very casual. He agrees with what Terry has to say. He says, I am old, you are young, you've got a burnt face, I've got a tin leg. That's not important. You are standing there, I am sitting here. Where's the difference? क्या फर्क है? बिल्कुल ठीक कहा आपने. So it's not important. So डेरी यहाँ पर जब मिस्टर लैम्ब ने उसको बताया कि मेरा टिन लेग है, तुम्हारा बर्न फेस है, व्हाट इज द डिफरेंस? तुम भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, वी आर ऑल सेम. ये सुन करके डेरी एकदम से स्टार्टल हो गया. ही सेड, यू गॉट अ टिन लेग? नाउ ही बिकम क्यूरियस इन मिस्टर लैम्ब स्टोरी. यू गॉट अ टिन लेग? कैसे हुआ ये सब? Okay, Mr. Lamb is thinking, okay, the real one means the original leg got blown off years back, and now children call him Lammy Lamb, and they tease him, they make fun of him, and they call him Lammy Lamb. And here we can see the picture. This is what Mr. Lamb's leg looks like. It's a tin leg, and this is his disability. So here, Mr. Lamb, he says it's okay. In the end, बच्चे जो हैं मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, आके मेरे को लेमी लैम कह के छेड़ते हैं, बस फिर थक जाते हैं. They get tired of it and they leave it. And they leave and they let it go. So I'm okay. It's perfectly fine. That it's all relative. So here he uses this phrase. It says it is all relative. Beauty and the Beast. Now, Beauty and the Beast is a fairy tale, and uska reference यहाँ Mr. Lamb ने ऐसे दिया है. It's an allegory. Allegory is a story or a poem or a picture which reveals a moral or something political hidden behind. तो यहाँ पर इसका reference Mr. Lamb ने इसलिए दिया है कि जो Beauty and the Beast है, it is meaning that different people have different viewpoints to look at the same thing. अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है एक ही चीज को देखने का, ये हम मानते हैं सारे. सो कुछ लोग एक चीज को ब्यूटीफुल फाइंड करते हैं. सम फाइंड वन थिंग ब्यूटीफुल, others find it ugly. It all depends on one's outlook and attitude and perspective. So it is very important to adopt a positive attitude. जैसे इस Princess Beauty, she loved the monstrous beast in the fairy tale. And in the last, I would like to say that it is not what you look like. जैसे आप दिखते हैं जरूरी नहीं, but what you are inside. So with this line, it is all relative, Beauty and the Beast. Mr. Lamb is trying to encourage Derry to adopt a positive attitude towards everything. Okay. So जब मिस्टर लैम्ब ने डेरी को बताया कि एलिगरी ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट, अगेन डेरी को फिर भी ये बात को समझने में फिर दिक्कत हुई. उसने कहा कि डोंट यू थिंक सो दैट पीपल हैव नॉट टोल्ड मी दिस फेरी टेल स्टोरी अबाउट बिफोर? इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड. Handsome is as handsome does. Beauty, the girl Beauty, loved the monstrous beast for himself. And when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He would have stayed a monstrous beast. वो change हो गया, वो monstrous beast change हो गया. But I'm human. मैं कभी change नहीं हो पाऊंगा. और ये कह करके डेरी की आंखों में आंसू आ गए. Again, he's feeling guilty. He's feeling helpless. He says, and no one will ever kiss me ever. Only my mother. And she would only kiss me on the other side of the face. उस side of the face जो कि unburnt है, जिस तरफ साफ है. And I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. क्योंकि वो मेरी माँ है, that's why she loves me. Why should I like that? I don't want anyone to sympathize with me. I don't care if anybody ever kiss me.
I won't ever look different. So it's deep rooted, the pessimism, the pain, the hatred for others, depression. It's so deep rooted because of that accident that the acid fell on his face. He says, I will never look the same. When I'm as old as you, I will look the same. I will still only have the half face. आधा फेस हमेशा मेरे पास ही रहेगा बस, और आधा फेस मुझे हमेशा छुपा करके ही रखना पड़ेगा. दिस इज माई लाइफ. But Mr. Lamb encourages me. He says, the world's got a whole face, and the world is beautiful. You see, how you perceive. You might be having this disability, but the world is just beautiful. तुम देखो, अपना नजरिया बदलो और दुनिया आपको अच्छी दिखेगी. The world is just marvelous. So he is encouraging Derry to look into the whole world with a different perspective. फिर डेरी बात चेंज करने की कोशिश करता है. सिद्ध, डज योर लेग हर्ट यू व्हेन इट केम ऑफ? जब भी तुम अपने लेग को निकालते हो, क्या वो हर्ट करता है तुम्हें? डिड इट? Yeah, certainly it does. Now and then, especially in wet weather, it does hurt me. The leg pains and it does hurt me, but that is not important. It's just perfectly fine. It's So part of it. then Derry says, look at those people, those who are in pain, then brave, they never cry and they never complain and they don't feel sorry for themselves. And think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded. सोचो, Mr. Lamb, कि हो सकता है तुम अंधे हो सकते थे. You were born deaf or have lived in a wheelchair or be daft in your head and dribble. But तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ enjoy कर रहे हो. अब ये सुन करके मिस्टर लैम थोड़े से हंसे और कहने लगे, ओ, Oh, that's true. And you know it. It's all part of it. That is what you're saying is absolutely true. अगेन डेरी की आंखों में आंसू एंड ही सेड्स, बट एवरी एंड एनीथिंग, इट वोंट मेक माय फेस चेंज. मैं कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा. और वो बताता है अपना एक इंसिडेंट जो कि उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड हो गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया. एंड वेरी ऑफन दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल दोज हु फेस सच काइंड ऑफ चैलेंजेस ड्यू टू देयर डिसेबिलिटीज. ये डिसेबिलिटीज, प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है ये फिजिकल हैंडीकैप हो. देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड शॉर्टकमिंग जिनको हम अपने ही मन में खुद से भी पैदा कर लेते हैं, जैसे ब्यूटीफुल ना होना, या पढ़ाई में अच्छे ना होना, हाइट में छोटा होना, या फिर ज्यादा थिन होना या ज्यादा मोटे होना. सो हम अपनी ही शॉर्टकमिंग्स के साथ में हम डील करना नहीं चाहते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. Over here, Derry is again saying again and again, but it won't make my face change. मैं कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा. And then he tells an incident. Do you know, one day a woman went by me in the street and I was at a bus stop and she looked at me and she whispered to another woman. वो कानाफूसी कर रही थी मेरे को देख करके, and she said, look at that terrible thing. That's a face only a mother could love. पता है इसका कितना बुरा असर पड़ा जब लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं उनकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में. मैं आज तक नहीं उबर पाया हूं उससे. सो ओवर हियर, डियर चिल्ड्रन, आई हैव पुट दिस पर्टिकुलरली इन दिस येलो बबल ओवर हियर कि एक किसी का भी मजाक उड़ाना किसी के लिए भी दूसरे इंसान को डार्कनेस की तरफ ले जाता है, ऐसी डार्कनेस जिससे वो कभी नहीं उबर पाता. सो यू हैव टू मेक श्योर कि चाहे किसी की भी शॉर्टकमिंग्स हो, कैसी भी हो, ट्राई एंड एक्सेप्ट देम. ओके, नेवर मेक फन ऑफ देम. ये इतना जबरदस्त इंपैक्ट देती हैं. चाहे आपने किसी के बारे में हल्का सा भी मजाक उड़ाया है या कुछ बातें बनाई हैं, तो उसके लिए वो इंसान डिप्रेशन में भी चला जा सकता है. Okay. Hearing Derry's sadness, hearing Derry's mind, Mr. Lamb moves and says,
I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say, bees buzz. कुछ लोगों को जो bees की आवाज है वो buzz जैसे harsh voice आवाज सुनाई पड़ती है. But when you listen to the bees for a long time, they hum. And hum means sing. I hear them singing, my bees. So indirectly, Mr. Lamb is telling Derry that it is not important that how you think the society is. It is more important how you feel. They might mock you, they might hate you, they might say words which hurt you, but we have to turn to nature for comfort and peace. That's wonderful. That's wonderful. अब मिस्टर लैम ने इतना अच्छा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है मुझे एग्जाम्पल कि बीज जो हैं वो कुछ लोग उसको सोचते हैं कि वो हम कर रहे हैं, बट मिस्टर लैम सोचते थे या हम सोचते हैं कि वो सिंग कर रहे हैं. सो दिस इज पर्सपेक्टिव. ये नजरिया है हमारी सोच का. हम किसी भी चीज को अलग नजरिए से देखें तो लाइफ हमें ब्यूटीफुल ही लगेगी, ये वर्ल्ड जो है हमें खूबसूरत ही लगेगा. सो हियर्स द एलिगरी ऑफ द बीज इज बीइंग शोन ओवर हियर इन द चैप्टर, which is showing different perspective towards life. So let's understand some more perspective, dear children. आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? Write in the chat box. हम बात कर रहे हैं पर्सपेक्टिव की, हम बात कर रहे हैं नजरिए की. So what do you over here see in this image? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए आपने अब तक इस चैप्टर में क्या समझा है, आपको क्या दिख रहा है सामने. I'm reading the chat box. क्या दिख रहा है? Look at this image below and what do you see? So our dear children are writing yes, and some have said it is half empty and some are saying it is half full. Right? Okay, dear children, they are writing. Yes, Ajit Pandey has written water. So yes, it's half. Yes, it is water. Kajal is given Jha, and then we have Bhumi, Arun Rajput. Yes, Divya says half empty. So we are getting a lot of responses. That is the image, or that is the perspective which we see the class with. Okay. But let's have a look and see some other perspectives of the same image. Okay, so यहाँ पर ना हमारे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम allegory क्या है? So allegory, dear children, it's a short story or a poem or a picture that can be interpreted to reveal hidden meanings. कि ऐसी allegory, ऐसे example देना जिससे कि हम उसके hidden meaning को समझ सकें. जैसे कि allegory थी वहां पर bees की, कि उन्होंने बताया कि वो हम करते हैं, sing करते हैं, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? Perspectives पता चल रहा है, right? So let's have a look at the different perspective. हमारे कुछ बच्चों ने लिखा half empty है, half full है. अब देखते हैं कुछ और perspectives. Optimistic कहेगा कि ये glass जो है वो half full है. एक पेसिमिस्ट, एक निराशावादी इंसान कहेगा दिस इज अ हाफ एम्प्टी ग्लास. एक रियलिस्ट इंसान कहेगा, जैसा कि मिस्टर पांडे, किसने कहा था अभी जिसका आपने पढ़ा था, और भी कहा था पांडे, दिशांत, दे सेड इट इज वाटर. दे आर रियलिस्ट, वो रियलिटी को देखते हैं, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. एक फिजिसिस्ट, वो तो डील करते हैं, तो वो इसको कहेंगे कि इसमें तो भाई आधी गैस है और आधा लिक्विड है, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट. बस सबसे पसंदीदा जो मुझे लगा ना सोनिया मैम, वो है एक आर्टिस्ट का ग्लास. कि जिंदगी जितनी भी मिली है ना, आर्टिस्ट ने अपना ब्रश डाल दिया है विद द कलर, और दुनिया को एक अलग ही नजरिया, अलग ही तरीके से वो पेंट करने वाले हैं. सो ये कुछ अलग अलग टाइप के नजरिए हैं, और ये है नजरिया हमारे बच्चों का. सो ये जो चिल्ड्रन है, दे हैव प्रूव्ड दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यू जस्ट नीड अ रीजन टू बी हैप्पी. सो हियर इज द सेल्फी ऑफ द डे. ये बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने खुश हैं. दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. राइट. सो वंदना, we've spoken about different perspectives. Now, Derry, let's come back to Derry and Mr. Lamb. Derry has been treated very poorly by the society, and he avoids others and assumes that everyone either pities or fears him. उसको ये डर है और परेशानी है कि मुझसे या तो सारे घबराते हैं या मेरे पे पिटी करते हैं, दया करते हैं. Mr. Lamb, on the other hand, sees disabilities as something that don't matter.
He's very casual. है तो क्या हो गया? And his conversation with Derry offers the boy a different perspective. So, through Mr. Lamb, the author wants us to understand that in life, we have to accept, as a society, we have to accept the disability, people with disability, and more importantly, the people who have this shortcoming should have a broader perspective and accept themselves, like we are going to see. That's very wonderful. चाहे किसी के अंदर कोई भी shortcomings हो, उनको embrace कीजिए, उनको accept कीजिए. So children, dear children, up time for the chat box to run. Let's decode Derry's behavior right here. मैं यहाँ पर first आपके लिए करके देने वाली हूँ. So Derry whose face was badly. जल्दी से choose करिए कौन सा option आएगा यहाँ पर. The first one, I'm doing it for you. Derry's whose face was badly burnt and disfigured by acid in a past accident avoids other because of how they might react to his what? Number two. Yes, बताइए. Is Sonia ma'am. Yes, we get still on the first answer. We are getting from Jyoti and Sujit. Okay. Okay, we are still waiting for the right answer. Burnt and disfigured is coming. Aditya has given us the right answer. Okay. No, we're still not on the second answer. So we'll release the answer. Okay. So yes, so children, we are since running short of time, we have to give you the homework also. So jaldi se likhiye, we'll be doing till 5 only. Jaldi se bataiye. Number 4 bataiye ab aap. He describes several incidents of people being cruel and insensitive to him. People who saw him reacted to it. आगे क्या आएगा? Number 4. Yes, reacted to it. कैसे react किया उन्होंने? जल्दी. Come on, write down in the chat box. Children are writing. Yes, yes. Very good, very good, very nice. Negative. The answer is there. Shama has given us the right answer. We'll repeat the right answer. Shama has given us the right answer. Yes, let's see. Thank you so much, Shama. And then Akanksha has also given us the right answer. Shockingly, yes, it's coming there on the screen. Okay. So shockingly, they have reacted. He started disliking people. Most notably, he describes 2 women at a bus stop. क्या कर रही थी वो 2 women? मैंने आपको बताया था, dear children. What they were doing? Write down in the answer box. Chat box. Come on. Prachi, Simran, Suresh, they have all given us the right answer. Gauri Verma ने बिल्कुल correct answer दिया. सबसे पहले दिया. Yes, Gauri. Whispering. Very nice. Very nice. Okay. So that's wonderful, dear children. आप इस तरीके से अपना इसको कर सकते हैं. और I'm just releasing all the answers right in front of you. Yes, we can ask them to. Yes, we can ask them to take a screenshot and then later decode Derry's behavior, which is very important throughout the session. Because we'll see, is there a change in his behavior? Let's wait and watch. Okay. So perspective definitely matters, dear children. You can take it screenshot as well. आपको अपने perspective को change करना है of the people with the disabilities. जो अपने आप को hate ना करें. Yes, Sonia ma'am. Yes, yes. We've already discussed this, and I would like to bring the weeds example back again. Here, there is a difference between people, but there is no reason to use these differences as an excuse to elevate some and oppress the others. Okay. So we cannot change the society's perspective, but we can change our own perspective. Yes, it's easier to change our own perspective. Yes, हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत. That's wonderful. That's wonderful. And instead of feeling ashamed and angry, we can recognize the other people and understand the importance of life and valuable in its own way. That is very important. Okay. So if you remember, we had spoken about green zones earlier, and now we know how to come into the green zone comfortably by keeping a positive perspective and not being ashamed or hating the world. It's easy. Okay. Yes, Vandana ma'am.
So, dear children, this is the first homework. Total 3 homework है आपके. So, आपको क्या करना है? इसमें match the following करना है. Column 1 को column B के साथ में. ये first part है sentence का column A में और उसका concluding part है column B में. So, kindly take the screenshot of this and do this in your register. Get it checked by your teachers. And don't forget to do the Google form also. Your next homework is you have to write a speech on people with special needs don't want sympathy, they just need acceptance. So you have to comment with the illustrations. Okay, hints aapko diye gaye hain yahan pe, so take it screenshot. Do this in your registers as well. Here is your third homework. There's a Mr. Lamb and Derry. They represent two serious aspects of life. Compare and contrast by putting the right phrases. यहाँ पर box में आपको phrases दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, 2 boxes में बिल्कुल ऐसे ही अपने रजिस्टर में मिस्टर लैम्ब और मिस्टर डेरी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स और phrases हैं वो आपको उन बॉक्सेस में लिखने हैं. सो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस लिखने हैं. And this will also help. So thank you, dear children. Wonderful session it was. आपने बहुत अच्छे से participate किया. And this is me, Vandana, signing off along with my dear friend, Mrs. Sonia Makhija. And thank you so much, friends. It was a lovely session. I hope you understand and keep perspectives, positivity with you throughout the week. And we come back again next week with the next part of On the Face of It. And try decoding On the Face of It on your own. Great. Have a good day. Bye. Bye all of you. और मैं भी जानने के लिए उत्सुक रहूंगी कि क्या डेरी का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि नहीं. सो उसके लिए वेट करते हैं अगले हफ्ते का. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. दिस इज मी वंदना साइनिंग ऑफ. बाय बाय.